Good evening, students. Today we are going to complete our algae chapter because we have discussed lots of things in the algae classification. Okay, we have discussed gymnosperm, angiosperm, types of algae on the basis of their natures, classifications, reproduction stages, on the basis of their nutrition. So many things we have discussed. But today, our most important topic is the first and last is Bentham and Hooker system of classification. Okay, so after the classification of algae, there is a numerous plants is left behind for the taking a proper classification. That time Bentham and Hooker, the two great scientists from British, they have developed the special classification on the basis of the Phanerogames plant. In this, they divided the plants kingdom on the basis of their क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिली इन थ्री ग्रुप्स. इन्होंने तीन ग्रुप्स में बांटा था एंड द थ्री ग्रुप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड द ग्रुप्स का अगर मैं बात करते हैं तो ग्रुप्स में भी फर्स्ट इज डाइकोटिलिडन्स, monocotyledons and gymnosperm. Okay, gymnosperm we have already discussed, so that is our very important topic. We have discussed gymnosperm and angiosperm, and we have also discussed the difference between gymnosperm and angiosperm. So most important question for your exams is what is the difference between gymnosperm and angiosperm plants. Okay, because in most of the time such type of questions may be asked. Gymnosperm कैरेक्टर्स नहीं पूछता है, एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स नहीं पूछता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट the questions may be arises that what is the exact difference between gymnosperm and angiosperm. Okay, so you all have to revise and learn all the things very carefully. So today we are going to discuss that the Bentham and Hooker classification on the basis of the algae classification, because there is a so large family are surviving in our environment, so that scientists got confused to identify and place in a proper group. So that time the Bentham and Hooker, the full name is George Bentham and second Joseph Dalton Hooker. Okay, two great scientists came into the existence of in a British botanist. They are very important and they are very minded persons to classify the algae on the basis of their nature and their family members. Okay, so most important their groups is totally based on the genera Platyrum, because there is a Plantarum, and it means that most of the genus and species of plants are considered in the same group of cotyledons, monocotyledons and gymnosperm. Okay, so these are the very important things, because most of the seed bearing plants are considered in the dicotyledons, monocotyledons and gymnosperm plants also. Okay, so इनका सबसे important base ये था कि इन्होंने जो classification किया, so classification is totally based on the seed bearing plants, जो seed को bear करते हैं, and generally we have discussed naked seed and with seed bearing. Okay, so don't get confused. So here most important point, their contribution in approx 202 natural orders are considered in the algae family. algae के family में इन्होंने करीबन 202 natural orders दिए थे, and this theory is also called the natural system of algae. ये इस system को हम natural system of algae के नाम से भी जानते हैं, because these two great scientists has given their totally and confidential theory on the basis of 202 species of algae, and they divided 202 natural orders of the algae on the basis of their 97,205 species थे उसमें, and most important 7,569 genera थे उनके, यानी genus और species we have studied in first chapter also. Okay, now apart from that, Bentham and Hooker classification is totally based on three classes, as I told you. Okay, so these three classification is totally based on the basis of the seed bearing plants in our environment. Okay, हमारे environment में जितने भी plants हैं वो ऐसे plants जो seed को bear करते हैं, that is called the seed bearing plants, and they are further divided into dicotyledons, monocotyledons and gymnosperm. Okay, what is the meaning of dicotyledons, what is the meaning of monocotyledons, and what is the meaning of gymnosperm? Actually we have studied dicot and monocots in 9th and 10th class also, but here we will study in a detailed manner what is the meaning of dicotyledons and monocotyledons. Okay, so in dicotyledons generally
it bears a seed form in a double layer. The embryo maybe appears as a double layer. They are called dicotyledons. And mostly occurrence की बात करते हैं, they are occurs in a tap root of plants. Mostly जो tap roots होते हैं, we have also discussed the what is the meaning of tap root, fibrous root, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. So generally dicotyledons is appears on the tap root plants में होते हैं. Okay, and most important, the leaves with reticulate venation. Reticulate venation means we have studied if there is a leaf. Okay, ये अगर leaf है suppose, so यहाँ पे एक पैरेलल वेनेशंस होते हैं और एक रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं. सो इन दिस केस in the leaf there is a two type of venation system. There is a sim parallel and there is also a reticulate venations. Okay, so in this dicotyledons की बात करते हैं, there is a reticulate venation is there. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट में, there is a parallel venation is there. उनमें parallel होता है. If you will see the leaves of any plants, definitely there is a midrib and there is a center line and there is a different types of venations can be appear, and that is also there is a difference. If there is a parallel, it means they are considered as monocotyledons. If there is not a parallel in a differentiated into different lines, okay, so that is called reticulate venations. Okay, so I will clear all the things when we take and come to the differentiate between these two things. Okay, but firstly we have to complete all the topics. Again we have to discuss that what is the meaning of reticulate, and most important what is the meaning of parallel venation. Okay, we will also discuss in next phases. So first and most important, we have discussed two things. Second, seeds are generally dicotyledonous embryo. Mostly the seeds are covered in a two packed embryos. Okay, so embryo is a single but there is a partition is there, so that is called, they are called as dicotyledons embryo. इसलिए वो dicotyledons, di means two and cotyledons means, and we know that we have also discussed seedlings and cotyledons in plants में बहुत सारी चीजें हम देखें. So they are dicotyledons in nature. Okay, and most important, after the primary stage there is a secondary growth is also takes place. Primary stage के बाद इनमें secondary growth भी होते हैं. Okay, now next coming to the most important part, vascular bundles are arranged in a ring. इनमें जो vascular bundles होता है, we have studied in xylem and phloem. So in this vascular bundles are arranged in a ring like structures. Ring like, it maybe appears as that type of structures are called ring like structure. So due to the adverse and vast in natures, these types of dicotyledons are differentiated into so many families. Approx 15 family is given in your book, so we have to discuss only 5 family, which is very important for your exam purpose. Okay, so most important, there is a 5 family, and the first family is crucifer. Crucifer is a special family of dicotyledons, and that means crucifers की बात करते हैं, that is comes in the class of radish and cabbage. Radish और cabbage दोनों जो है ये crucifers में आएंगे. Second अगर हम बात करते हैं leguminosae. Leguminosae is a special class division and family of dicotyledons. It comes in the pea and gram. इसमें pea और gram आते हैं. ठीक है. So apart from that, we have to discuss that cactaceous. Cactaceous means all the types of cactus. जितने भी cactus होते हैं, where they are generally found in the dry and desert area, they comes in the class of cactaceae. ठीक है, इसको हम cactaceae के नाम से भी जानते हैं. Now last point is solanaceae. Solanaceae means potato and brinjal. Potato and brinjal is also comes in the class of dicotyledons in Solanaceae family. ठीक है, इनकी जो family है वो Solanaceae में होते हैं. When you appear in a botany department of any graduation level, that time you will study Solanaceae. Now next point is that rosaceae. Rosaceae means the rose and strawberry are comes in the class of rosaceae classification of dicotyledons. So in next we have to discuss the what is the meaning of monocotyledons and what is the meaning of gymnosperm. We have to discuss. Okay, so in next phase we have to discuss the most important and beneficial topic, that is called monocotyledons. Okay, we have discussed dicotyledons and next is our monocotyledons. What is the meaning of monocotyledons? Mono means single
and cotyledons means single coat. Okay, that is called monocotyledons. Okay, in dicotyledons we have discussed that if there is a di means two and cot means also a special type of coating substance. Okay, so dicotyledons means two cot and mono means single cot is present in the seed are called monocotyledons. Okay, so most important the features is generally they are monocotyledons are found in adventitious root system, but most important the difference is they are generally found in tap root system. What is the most important? Dicotyledons are generally found as occurrence of taproot, but monocotyledons is generally occurrence is adventitious root system. जो adventitious root systems में होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं, ठीक है. Monocotyledons and leaves are generally parallel venations. Okay, what is the meaning of parallel venations? When we take a look of difference between that time we have to clear what is the meaning of radiculate venation and parallel venations. Okay, so last most important seeds are generally monocotyledons. as I told you that इनकी जो most important अगर इनका difference होता है तो वो उनके seed के base पे ही होते हैं कि इनके seed में dicot यानी दो cot है तो dicotyledons और single cot है तो monocotyledons. Okay, most important जो इनका classification था Bentham and Hooker का which is totally based on seed bearing, जो कि पूरा का पूरा seed bearing के ऊपर ही based था, ठीक है. seed को लेकर इन्होंने classification किया था. most important vascular bundles are closed. इनमें जो vascular bundles होते हैं mostly we know that the meaning of vascular bundles, vascular bundle का मतलब होता है कि when the flow of water and when the flow of oxygen, when the flow of very important mineral materials to the plants which is generally run by the xylem and phloem, और भी बहुत सारे vessels होते हैं, companion cells होते हैं. उसके अलावा vascular bundles is also present in the plants which play a very important role for transportation of different types of substance. Okay, so they are very closed in typing. में जो होता है monocotyledons में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड टाइप होते हैं, बट इन डाइकोटिलेडन्स द वेस्कुलर बंडल्स आर इन अ ओपन्स, ठीक है, जो ओपन होते हैं, खुले हुए रहते हैं, बट दे आर वेरी क्लोज्ड टाइप. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्लोरल होल्स की बात करते हैं. दैट इज कॉल्ड एट ट्राइमेरस. ट्राइमेरस मतलब होते हैं तीन पत्तियों वाले. ओके, थ्री पेटल्स. सो मोस्टली दोज प्लांट्स हु बियर्स generally three plants or more than multiple of three plants are called as monocotyledons. Okay, we will discuss also by taking and differentiate between the monocotyledons and dicotyledons. also trimerous का मतलब होता है three petals, तीन पत्तियों वाले plants generally, and they are more than the three means there is a multiple of three maybe 6 maybe 9 maybe 12. Okay, so if there is a lots of petal but they are repeating the पैटर्न ऑफ थ्री का मल्टीपल होते हैं वो, दैट इज कॉल्ड ट्राइमेरस. एंड मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स आर कॉल्ड ट्राइमेरस पेटल्स व्हिच आर फाउंड इन देयर प्लांट्स. उनके प्लांट्स में से ट्राइमेरस पैटर्न पे होते हैं, सो दे आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज वी हैव टू डिस्कस दैट what is the family, because we have discussed 5 family in dicotyledons, but here there is so many families are there, but most important 4 family is most important. okay, so जो सबसे important family है, सबसे पहला है Liliaceae. Liliaceae is a special family of monocotyledons and it comes in the example of onion and garlic. okay, we know and we all are familiar with onion and garlic. okay, so next important is palmy. palmy means होता है all the types of palm plants. जितने भी palm plants होते हैं जैसे कोकोनट हो गया या डेट palm हो गए, ये सब आपके palmy plants मतलब कैटेगरी में आते हैं. okay, now most important and last second is gramineae. Gramineae means mostly the wheat, the rice and the barley plants are comes in the class of that family. okay, and last is banana and that comes in the class of Musaceae and it is also comes in the class of monocotyledons. so 4 classification of family is given, so I request you to, this is my first homework, write the classification of their family members of dicotyledons any 5 and monocotyledons any 4. okay, this is your first homework, so you have to write down all the family which I have mentioned here, and this is your first homework. You have to write down the only family classification of dicotyledons which I have mentioned here and 4 classification of monocotyledons. इसमें 4 family है और dicot में 5 family है, with examples also you have to give me. okay, and next we have to discuss that the most important and last topic of that chapter is
differentiate between monocotyledons and dicotyledons. Okay, because in most of the times we also discuss that monocotyledons in a stem also and dicotyledons stem also. So here we are also studying all the things. monocotyledons plants की बात करते हैं same as it is, उसमें डाइकॉट सीड्स भी आते हैं, मोनोकॉट सीड्स भी आते हैं, डाइकॉट स्टेम भी आएंगे, मोनोकॉट स्टेम्स भी आएंगे. ओके, सो वी आर स्टडिंग ऑल द कॉम्पैक्ट टॉपिक. सो एट लास्ट in this we have to discuss what is the meaning of reticulate and parallel venations. Okay, so as I told you that in next phase we will discuss the reticulate and parallel venations. So first topic is most important, reticulate and parallel venation which takes place in leaves. ये पत्तियों में हमको देखना है कि किस प्रकार के parallel और किस प्रकार के reticulate venations होते हैं. Okay, so first important, what is the meaning of parallel venations? Parallel venation का मतलब होता है in a plant, ठीक है, किसी भी प्लांट्स में the veins of leaf blade, जो भी लीव्स के जो ब्लेड होते हैं, जनरली ब्लेड मींस इट इज नॉट अ आयरनी पार्ट, ब्लेड मींस जो मिडरिप होता है, जो कि नॉर्मली हमको किसी भी लीव्स में दिखाई देते हैं या लेमिना कहते हैं उसको, आर एग्जिबिटिंग द पैरेलल पैटर्न्स फ्रॉम द बेस टू द टिप, यानी बेस से लेकर टिप पोर्शंस तक जो भी उसको शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशंस. अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, सो सपोज दिस इज द लीफ. ओके, ये एक लीफ है और अगर हम बात करते हैं इस बेस से लेकर इस टिप के पोजीशंस तक. ओके, सो वी आर टेकिंग एज एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल वेनेशंस. पैरेलल वेनेशंस का मतलब क्या होता है? सपोज वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ एनी लीफ. लीफ की बात करते हैं तो ये बेस से लेकर इनके बीच का जो लेमिना होता है, दैट टाइम देयर पैटर्न्स ऑफ लाइक दिस, इनके जो पैटर्न्स होंगे वो इस तरह के होंगे, पैरेलल होंगे. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. देयर इज नो इंटरफेयरिंग ऑफ एनी अदर लाइंस. ठीक है, इनमें कोई भी और दूसरी लाइंस आके नहीं जुड़ती हैं. दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर जनरली started from the base to the tip positions and all the lines of veins are generally parallel in nature. ये parallels होते हैं. ठीक है, ये parallel होंगे. So इसी को हम क्या कहते हैं? Parallel venation. And if there is a net-like or a web-like structures are comes in the class of leaf, अगर किसी भी leaf के स्ट्रक्चर में आता है, अगर वेब लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशंस. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द वेन्स ऑफ द लीफ ब्लेड, अगर किसी भी लीफ ब्लेड में या उसके लेमिना में, कोई भी प्लांट्स की पत्तियों में जब नेट लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप, मिडरिप के दोनों तरफ, वेदर दिस साइड एंड वेदर दिस साइड आल्सो, जो भी दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जांपल. ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन? सो हियर सपोज ये एक लीफ है. ठीक है, और ये दिस इज द मिडरिप, यहाँ बीच में एक मिडरिप है. सो जब भी ये वेनेशंस होंगे तो ये यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर ये से वेब लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. ठीक है, सो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जनरली ये रिपीट भी होते हैं. ठीक है, इसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, क्योंकि ये वेब लाइक बनते हैं. वेब लाइक मतलब पैरेलल होने के साथ साथ इनके और भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इधर उधर भी देखने को मिलता है. दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशंस. सो मोस्ट ऑफ दी वी हैव आल्सो डिस्कस सो मेनी फैमिलीज एंड सो मेनी प्लांट्स. उनके बहुत सारे प्लांट्स और फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया. सो वी हैव टू टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम दैट. कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होंगे जो रेटिकुलेट वेनेशन को शो करेंगे और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होंगे जो आपके पैरेलल वेनेशन को शो करेंगे. सो यू हैव टू गिव मी अ 5 एग्जांपल्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशंस. रेटिकुलेट वेनेशंस का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि जो पैरेलल के साथ साथ जो नेट लाइक या वेब लाइक स्ट्रक्चर शो करेंगे मिड रिप में दोनों साइड, वेदर लोअर साइड आल्सो या फिर अपर साइड आल्सो, उसी को हम आपके रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं होते हैं. पैरेलल होने के साथ साथ इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इधर उधर भी रहते हैं. दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. बहुत सारी पत्तियों में हमको देखने को मिलती है. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट क्लास यू हैव टू गिव मी अ 5 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेनेशन एंड 5 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन. 5 एग्जांपल्स आपको पैरेलल वेनेशंस के, 5 एग्जांपल्स आपको रेटिकुलेट वेनेशंस के देने हैं. ओके, सो आफ्टर दैट
we have to discuss the most important topic for our exam purpose is monocot and dicot में difference. We have discussed monocotyledons, we have also discussed dicotyledons, and next in previous class we have also discussed angiosperm and gymnosperm, because Bentham and Hooker classification is totally based on the seed bearing plants, and they have divided the plants into three categories: monocotyledons, dicotyledons and most important angiosperm, क्योंकि angiosperm की variety सबसे ज्यादा थी. So that's why monocots and dicots are further divided on the basis of their floral design, on the basis of their vascular bundles, on the basis of their leaf venation. बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स अलग अलग हुए, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मोस्टली दे बियर डबल सीडेड एम्ब्रॉयो, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयो तो होता है लेकिन डबल कोट में होते हैं. यहाँ पे भी एम्ब्रॉयो होता है लेकिन सिंगल कोट में भी होता है. तो ऐसे मोनोकॉट में सिंगल, डाइकॉट में डबल, इन सारे सिस्टम्स को देखते हुए दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट्स. जनरली एम्ब्रॉयो विथ अ सिंगल कोटिलेडन्स. एज वी हैव स्टडीड कोटिलेडन्स क्या होते हैं, सीडलिंग्स क्या होते हैं, ठीक है. सो इसमें सिंगल्स कोटिलेडन्स होते थे. नेक्स्ट इन लीफ वेनेशंस आर जनरली पैरेलल. लीफ वेनेशंस जो होते हैं जनरली पैरेलल फॉर्म में होते हैं. वी हैव डिस्कस्ड हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल वेनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन. तो पैरेलल वाला मोनोकॉट्स में होगा एंड सेकंड जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट्स में होगा. दैट इज द डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस इज दैट एम्ब्रॉयो विथ अ सिंगल कोटिलेडन्स, इनके जो एम्ब्रॉयो होंगे वो सिंगल कोटिलेडन्स के होंगे. बट इन डाइकोटिलेडन्स द एम्ब्रॉयो विथ टू कोटिलेडन्स, जो कोटिलेडन्स होगा जनरली वो टू फेजेस में होते हैं. Okay, now second point is that leaf venations are parallel. जो monocotyledons generally possess leaf venation in a parallel system, but they possess the leaf venation in a reticulate type. Reticulate type इनमें venations होते हैं. Okay, so after that we have to also discuss here secondary growth is absent in monocots. Secondary growth is absent, but in dicot secondary growth is present. Okay, secondary growth is present means all the plants are required, all the types of growth for their proper development. Now next stage, vascular bundles are closed. यहाँ पे जो vascular bundles होते हैं वो closed होते हैं, but here vascular bundles are open. Vascular bundles we have discussed in xylem and phloem, because also they are very capable to transport the different types of minerals and materials through the plants. Okay, and last point we have to discuss that flowers are generally trimerous type. Trimerous type means पैटर्न ऑफ 3 पेटल्स, यानी 3 पेटल्स के पैटर्न पे होंगे, या मे बी मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं उन पैटर्न्स में आपको देखने को मिलेगा. दैट इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर्स आर पेंटामेरस. पेंटामेरस मतलब 5, जहां पे नंबर ऑफ 5 पेटल्स आपको देखने को मिलेगा, आर मे बी मल्टीपल ऑफ 5 आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स. ओके, दैट इज द मोस्ट. पेंटामेरस मींस 5 पेटल्स. पेटल्स मींस पत्तियां, ठीक है. जो पत्तियां या लीव्स जो हम यूज करते हैं generally, that is called pentamerous. Okay, this is the botanical term used for the showing the petals in the plant cases. Okay, so this is your third homework. You have to write down the 5 difference between monocotyledons and dicotyledons also after the completion of class, and you all have to send me your notes, okay, in my personal WhatsApp. Till then your algae chapter is totally completed. If you have any doubt regarding the classification of monocot, dicot, because in your book there is a so much classification. monocots के भी बहुत सारे classification दिए हैं, dicots के भी बहुत सारे classification दिए हैं, but it is not necessary for 11th class and 12th class also. Most of the outer topics are generally comes in the board exam and your also 11th class also, ठीक है. monocots, dicots ये बहुत important है, पूछता है. angiosperm, gymnosperm most important है, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में. but not so important their classification. उनके classification is not an important part for your bio purpose. Okay, so till then whatever I have taught you, revise all the things very carefully, and next we will start a new chapter. Okay, thank you students.